गुड इवनिंग जी। तारीख है 22 अक्टूबर। आज है महाअष्टमी। रात के बज रहे हैं 10 और कल जब मार्केट खुलेगा तो एक बार एनालाइज करते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट वीक की एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक है लेकिन कैसे लगता है मार्केट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखें तो ये देखिए, इसका सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट जब ये पॉजिटिव नहीं होता, आप देख रहे हैं जिस टाइप की कैंडल्स बनी है, सेम टाइप की कैंडल बनी है। ऊपर विक के साथ एक ग्रीन है और एक रेड है। इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज इनडिसिशन इन द मार्केट कंसीडरिंग द वीकली चार्ट। इट इज आल्सो नॉट ब्रेकिंग इट्स लो एंड नॉट ब्रेकिंग इट्स हाई। एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, लेकिन टिल द टाइम इट डज नॉट ब्रेक इट्स प्रीवियस स्विंग हाई या सुपर ट्रेंड पॉजिटिव 19,900 के लेवल तोड़ता नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। अपसाइड नहीं है। ठीक है, डाउन साइड के लिए 13 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वीकली चार्ट पे वो भी है। एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसका RSI ऑन द वीकली चार्ट, इट हैज गॉन बिलो 60। इट मींस इट्स मोमेंटम हैज एक्चुअली स्लो हुआ है। ठीक है, और डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में जो ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट का फेलियर होकर प्रीवियस स्विंग लो तोड़कर नीचे आ गया मार्केट। कुछ ज़्यादा ब्रेक लॉस तो नहीं है क्योंकि अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में फंस गया है। तो यस, बट वन थिंग इज वेरी श्योर दैट इट हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम। उसका मोमेंटम चला गया है। ठीक है, तो अभी तो आपको इसमें केवल लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए। लेवल्स क्या है, अभी आपको इसके लेवल मार्क करने हैं प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है, ये सारे लेवल्स को हम निकाल देते हैं। हमने प्रीवियस लेवल्स मार्क किए हैं, अभी इसके लिए लेवल्स ये है। फर्स्ट लेवल इज इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, रुकिए जी, 19,823। ठीक है, और नीचे उसके लिए लेवल है दिस 19,501। ठीक है, तो अभी चूंकि आप भी देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें पुल बैक नहीं आया है, सीधा 19,838 से सीधा ये 19,548 आया है। 300 पॉइंट का डाउनफॉल आया एकदम स्विफ्टली। संभव है थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर से ये नीचे आए। ऊपर कहाँ तक जाता है, 19,655 तक जाएगा तो डाउन ट्रेंड ही है। और जब एक बार इसको तोड़ देगा तब इसमें ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना बनती है। ठीक है, इसका MACD देखिए ऑन द डेली चार्ट तो नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गया है। चलिए, तो निफ्टी के लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी कंपैरिजन में इट्स मोर वीक। ठीक है, ये देखिए जो हेड एंड शोल्डर की बात हम कर रहे थे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने तोड़ दिया है। एक बार इसका लाइन चार्ट देखें तो विल बी बेटर एबल टू अप्रिशिएट दिस थिंग। इसने क्या किया है, अपने प्रीवियस स्विंग इसको तोड़ दिया है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के साथ इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज दिस लेवल। कौन सा, 43,250। एक बार इस लेवल पे आकर रुक सकता है और रुक के थोड़ा बाउंस कर सकता है, लेकिन एक बार ये टूटा तो आपको बहुत नीचे के लेवल देखने पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर है। जब तक अपना प्रीवियस स्विंग हाई ऐसा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता है, देयर इज नो पॉइंट इन लुकिंग एट द फेरी पिक्चर। इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी आप कंसीडर कर सकते हैं, दिस लेवल 44,500 44,600 का लेवल। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट वीक है। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोर्टफोलियो स्टॉक्स में चलते हैं। टाइटन टाइटन की बात करें तो टाइटन ने जो ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट का इसने फेलियर दे दिया है। देखिए, और वापस से अपनी कंसोलिडेशन जोन में आके गिर गया है।
ठीक है, तो ये वापस अपने कंसोलिडेशन जोन में आके चला गया है। तो जो हमने पैसे यहाँ पे ब्रेकआउट पे लगाए थे वो पैसे फंसे हुए हैं, हमने इसमें निकाला नहीं। ठीक है, देखते हैं। डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है क्योंकि अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है। एक बार इसको ब्रेक करता है देन विल एग्जिट फर्स्ट ट्रेंच ऑफ मनी दैट वी इन्वेस्टेड। इसलिए बोलते हैं कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू नॉट टू पुट योर होल मनी इन वन गो इन वन बास्केट। ठीक। सेकेंड थिंग इज व्हाट एफएसएल। एफएसएल को अगर देखें तो दिस स्टॉक इज एक्चुअली होल्डिंग दिस सुपर ट्रेंड लेवल सिंस लॉन्ग एंड इट इज आल्सो ट्राइंग टू ब्रेक। इसका अपवर्ड मूवमेंट इज समवॉट कंटिन्यू है and it is expected to move upward and break its consolidation zone. इसका MACD on the daily chart, this one is also very bullish, but the stock is not gaining momentum just because see its weekly RSI is above 60 and its daily RSI is below 60. Means what? Till the time it doesn't goes above 60, it is not going to gain momentum. If you look at the monthly chart, you'll find yes, it's all above 60. So we simply have to wait for its RSI to cross 60 level. That's all. Next stock is Tata Elxsi. Tata Elxsi is one stock which gave a breakout. It's potent positive last week itself, and this week it gave a follow-up buying. See, it broke its consolidation zone and break this. Well, you can also see this in line chart also. ठीक है. But the good thing with this stock here is Anaya, what are you doing? Come here. कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई. आप लोगों ने बताया भी नहीं. एक्चुअली मेरे इस चार्ट स्क्रीन पे मैं दूसरी चार्ट पे एनालिसिस करता रह गया. ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ, where's the IDC? दो मिनट होल्ड करिए. आई एम सो सॉरी सो सॉरी. इतनी सारी बात हो गई लेकिन कुछ स्टॉक्स भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन एक्चुअल में हम बात करना चाह रहे थे. जी प्लीज होल्ड करिए. हाँ जी, तो आईटीसी की हमने बात कर लिया कि आईटीसी ने जो ब्रेकआउट था, द ब्रेकआउट दैट वी विटनेस्ड एंड entered put in our first stretch of money, वो actually got locked in this stock because this stock defies its breakout level and again fall back in its consolidation zone. So संतोष पर बोला हटो, always come to disturb me. Next up portfolio stock is FSL. If you look into this stock is trying to cross its नहीं कंसोलिडेशन जोन के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से. ठीक है,
इस चीज को आप अगर देखें कि इसका सुपर ट्रेंड लेवल को कितने अच्छे से ये होल्ड कर रहा है, देखिए 161 का लेवल इंटैक्ट है इसमें, ठीक है। लेकिन पूरे वीक का अगर वीक देखेंगे तो कितना है, इसने एक बार सुपर ट्रेंड को तोड़ दिया था, ब्रेकआउट लेवल को, वापस से सुपर ब्रेकआउट जोन के अंदर आ गया है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर। तो इसका RSI तो एक्चुअली 60 के ऊपर है, लेकिन डेली पीरियड में इसका RSI इज बिलो 60, तो इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है। Once it goes above its 60 RSI level, its price action will give a breakout here. So anybody who wants to put in our wants to consider a breakout stock, FSL को बिल्कुल अपनी लिस्ट पे रखिए। नेक्स्ट स्टॉक इज Alexi। देखिए Alexi को अगर देखेंगे तो लास्ट वीक itself it has given the breakout. See, and what happened this week? It broke out. There is a wick in the upside. It means there is a selling pressure, and somebody who is buying this stock in this consolidation zone doesn't want price to move up because its buying has not been completed. But if you look at this volume, look at the huge volume build up here. Look at the MACD on the weekly chart. It has become positive. Means what? This stock is going to gain a momentum. हमने क्या किया है on the daily chart? This is the indication on the weekly chart that yes, the stock has started outperforming. Now, what we do is how we make the entry. We follow the daily chart for making the entry. Its relative strength has gained momentum. MACD is positive, RSI is positive, and the stock has given a pullback from its previous swing high. So what we'll do, we'll wait for this stock to cross its previous swing high of this 77 on this level. Once it goes above it, we'll simply enter into this stock, make the first tranche of money. Okay? And we'll hold it till the time its super trend on the weekly chart is positive. That is the simple logic that we follow. The next stock is LNT. If you look into the LNT movement on the weekly chart, this stock has given a fabulous run up since bias to bias level, and this stock has given almost 50% run up since here without making any consolidation, without becoming its super trend negative. थोड़ा सा इसमें exhaustion टाइप का सिंबल दिखने लगा है, ठीक है। If you follow its RSI, it is simply showing on the daily chart. It is showing this type of exhaustion signal. And if you follow its RSI movement, its price action movement on the line chart and daily chart, तो आपको लगेगा कि it has started making downward lower lows. It has also broken its 20 period moving average. So what we have done is we have exited 50% of the quantity that we hold, because structurally this stock doesn't look convincing for me to put in my hell lot of money into this stock. एक राउंडिंग टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है. फर्स्ट थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इज दिस स्टॉक may come down and retest its breakout level this on this, and if it goes below this, then it will be a disaster and it may come and retest its 200 exponential moving average. ठीक है, and before that its super trend on the daily chart it will become negative. So that will be the ultimate signal for me to pull out all my money that I had on this stock. Then is Kalyani Technoforge. Actually, this Kalyani Technoforge, after giving this breakout in last week, this stock has given a fabulous run up in last 2 weeks. Okay, so if you look at its structure, it gives a इसमें बहुत अच्छी रैली आती है, then it goes into consolidation, रैली आई, then it goes into consolidation, रैली आई, it goes into consolidation. ये जो रैली आई है, it has not given a consolidation in this rally. तो अभी क्या हो सकता है, अभी हो सकता है कि this stock may go into consolidation. ठीक है, कोई इशू नहीं है. We are waiting for this stock and will remain in this stock till it doesn't break its higher high structure. एक बार higher high structure exit करके बनाएगा, will exit 50% of the quantity है. Tata Motors, wow,
If you look at the Tata Motors movement on the weekly chart, last week this stock broke out with the huge volume and with a Moribus candle. And this week it did nothing. What it actually did is it actually tried to distract the people from its price action. Okay, the price action is very convincing, but its MACD is still below its signal line. Means what? Once it goes above its signal line, then only it will be a sign of strength for people. So we are in this stock till its trend is positive. That is the only thing I can say. Once it goes below 609, I will exit it without any mercy. Tech Mahindra, I have exited this stock. A very nominal quantity just because of its brand name. I'm holding this one. Otherwise, there's nothing serious money commitment in this stock. Polymedicure is another stock after this FSL, which is consolidating after a huge since long period of time, and we're waiting for this super trend to become negative. That's all. We have already, since the stock has gone into consolidation phase, we have already exited 50% of the quantity. Only nominal money is there left behind just to keep this stock into tracker. Then is CDS. Wow. If you look into the price action movement of this CDS, you'll find this stock moves with a large candle, then it goes into consolidation for a considerable period of time, so that the people actually when it moves with around 7 to 8% run up in a week, it suddenly comes into limelight and people jump into this stock. Okay? So what practice does this stock follow is it moves with 7 to 8% run up in a week, and then it goes into consolidation for 2 to 3 months. So the people whose radar this scanner which is finding this stock having momentum, ये उसके बाहर जंगल से बाहर निकल आता है. ठीक है. The same thing is happening here. Last 2 weeks इतना अच्छा momentum, then क्या कर रहा है ये consolidate किया for a hell lot of period of time, and now it is making ground to move upward. So please keep this stock in your radar. This will definitely do the wonders that we have seen in BSE. Another stock that I want to discuss here is solar industries. This stock we purchased somewhere here at 47.33, and within no time this stock run up like this. It gave a run up like this, and we exited part quantity when it broke its previous swing high on the daily chart. Why we exited 50% quantity here? Because this swing is very low swing, just because the distance between its moving average and the price is huge. So the principle of convergence to the mean was very much expected, and the same thing happened. The price similarly broke down and came and retested its breakout moving average level. See, you can see this in the line chart, and from the moving average level it bounced back. Okay, so we'll deploy another tranche of money only when it goes above its previous swing high. I will not put in any fresh money here. Zomato. If you look into Zomato, this stock is repeatedly making the higher high structure. Once it goes above its previous swing high, I will definitely put into another tranche of money in this stock. Then Paytm. This is one stock which one should always put this in radar. This is the stock which is definitely going to double from here. Paytm. Currently it is at 987. It is moving in a higher high structure, and within no time this stock will retest its this क्या बोलते हैं listing levels 1953 पे जाएगा ये. Don't worry. Wow. If you look into the movement of this stock BSE, the way it has moved, it is very मतलब इसने मुझे अमीर बना दिया. The movement of this stock is really good, and after making a short consolidation, short correction, this stock has again started moving up with big candles. So anybody who has not purchased this stock yet, please stay away from here, because
You have to wait for this stock to come and converge to its moving average level and then make a fresh entry. Otherwise, rest what you show at this level is not good for this stock. I have asked my runner. I will add. आप मेरे चैनल में जाइए, कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे समवेयर 18-17 अप्रैल के आसपास के, where I added this stock somewhere at 558. तब से स्टॉक एक सीधे रन में जा रहे हैं, ठीक है। काला प्लेटफॉर्म, वाओ, दिस स्टॉक, ये क्या हुआ था, हम इस स्टॉक में एंट्री किए थे बेस्ड ऑन इट्स वीकली चार्ट MACD, इसने पॉजिटिव दिया था, देन वापस कंसोलिडेशन फेज में आ गया, हमने इसको होल्ड कर रखा और सी मैजिक वापस से ब्रोक करके अपने कंसोलिडेशन को ब्रोक कर दिया। अच्छा है स्टॉक ICICI सिक्योरिटीज। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिस स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट and I must say its structure is something like this, that this stock will do wonders. There is no doubt at all. चलिए, तो हमने मोटा मोटा स्टॉक्स की बात कर ली है, इंडेक्स की बात कर लिया है। कल के मार्केट में देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। जैसे बिहेव करेगा इंडेक्स व्यू, और तो बेरिश है, बुलिश नहीं है बेसिकली। बैंक निफ्टी वेरी वीक, इट में मतलब इसमें लंबा करेक्शन आ सकता है, एंड निफ्टी इज इन कंसोलिडेशन जोन, इट इज स्लिप बैक and return back to its consolidation phase, but stock wise action is immense. हम अपने stocks में हमने सब में लेवल बने हुए हैं। once its super trend on the weekly chart goes negative with ATI value 1, will exit all the stocks. I will not see whether they're in profit or loss. I will exit it simply. ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अपनी नज़र बनाए रखिएगा अपने पोर्टफोलियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।